7 positive stage. Listen to me, students. The last and the final stage of a human thinking or a human mind was the positive stage or the scientific stage, which entered into the world in 1800. The last and the final stage of a human thinking, this is human thinking बताने को और पूनम देखो दे दे Listen, students. हमें consider करथिले relative to theological or physical stage, second है metaphysical or abstract stage, है हमारा positive stage. जेतेबेले हमें consider करो relating to positive stage, the last and the final stage of a human thinking or a human mind was the positive stage or the scientific stage which entered into the world in 1800. प्रकृति रे जति हमें पॉजिटिव स्टेज कथा कहिबा प्रकृति रे हम ताकू एनालाइज करिबा आज साइंटिफिक स्टेज मु तुम कहिथिले साइंटिफिक स्टेज बा साइंटिफिक डेवलपमेंट वर्ल्ड ओवर आसला केते बेले आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 1688 किबा मॉडर्न सेंस रे जदी हमें कहिबा हमर साइंटिफिक स्टेज बा मॉडर्न एज रे स्टार्टिंग हैला आफ्टर द अराइवल ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन तेनु 1815 परे परे डेवलपमेंट हिची एलोपैथिक मेडिसिन that is nothing but the perception towards the scientific stage. तेणु आमे जेते कथा पिले कहूचे सब गुडा आजिकली साइंटिफिक लिटरेचर रे इवैल्यूएटेड होची साइंटिफिक व्यू पॉइंट रे इवैल्यूएटेड होची अलगा कोनसे कॉमन सेंस रे इवैल्यूएटेड हेबा which entered into the world in 1800 प्रकृति 1800 बोली कहू this stage was characterized by belief in science आजिकली जो कथा में कहूचे आमे साइंस ऊपर डिपेंड करू मुंडा बेंची चलो स्कैन कर दिया सर हाथ बेंची स्कैन एक्सरे करते बॉडी टोटल हमर एनआरआई स्कैनिंग होची जोटे काम बॉडी रो कोड एयर कोन फॉल्ट हमें जान करूचे इट इज नथिंग बट इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंस सो दिस स्टेज वाज characterized by belief in science people now tended to give up the search of absolute causes आजिकल लोक माने गॉड बा नेचर ऊपर जो डिपेंड करूतिले केतेटा को एम्फसाइज दउनाती भगवान बोली गोटे कौन से स्पिरिट अछि शब्द किछि एंटिटी अछंती किछि डिवाइन स्पिरिट बा स्पिरिचुअल स्पिरिट अछि किंतु भगवान को नै कि हमें को काम करिबा बा तांको पर विश्वास करिबा आ से विश्वास नै काम करिबा सेटा हमको सक्सेस दबो किंतु हमर डेली एक्टिविटीज पई हमर ड्यूटी पई हमर ऑब्लिगेशन पई भगवान को ना धर दे कौन से काम करबे हे जीव सत्य मान So students and concentrated instead on observation of the social and physical world in the search for the laws governing them. प्रकृति को नियम गुडा सेमान को गवर्न करिताय डे टू डे लाइफ पे एक्टिवेट करिताय सेटा गवर्न कर साइंटिफिक स्टेज according to Comte observation and classification of facts were the beginning of the scientific knowledge पे प्रकृति रे कोन रहला इंपोर्टेंस ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स जो फैक्ट ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करिबा जो फैक्ट ऊपर हम कोन करिबा कंसंट्रेट करिबा जो फैक्ट ऊपर हम व्यू पॉइंट देबा दैट हैज टू बी गाइडेड बाय साइंटिफिक डाटा पहिला मु एग्जांपल कोटा तुमको दउजे तमे चले जाओ गोटे अंगा कांथो अछि गोटे घर रो सेठी पुराना काल रे तम घर लोक माने कोन करथिले से कांथरे कोन करथिले जगन्नाथ को फोटो नाथि सेठी जाई जगन्नाथ को प्रभु को पूजा होतिला किंतु धीरे धीरे से कांथटा सोइला हमर से कांथ मूल पर बसे ना पूजा करबा उचित तने सब बेले हमर कॉमन सेंस पर चेतना शक्ति रहबे गोटे ब्रिज अछि हल ब्रिज ऊपर तबरे चढ़ी गए तुमे जाओ किंतु ब्रिज का फटा थिबो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी से ब्रिज ऊपर चली के जातो ब्रिज गड़ी गिरी पड़ी गिरी बंद होसे कर तो पिले हमें ट्रेडिशनल आउटलुक रे हमें प्रैक्टिकल आउटलुक रे हमर जीवन शैलीटा अलग प्रकार गिविंग बाय सर्टेन टाइप ऑफ एडवाइस रिलेटिंग टू साइंटिफिक परसुएशन वैज्ञानिक चिंताधारा द्वारा हमर कोन लागे जीवनटा परिचालित है हमें और ट्रेडिशनल ऊपर फोकस करू and concentrated instead on observation of the social and physical world in the search for the laws of government. According to Comte, observation and classification of facts were the beginning of the scientific knowledge. Scientific knowledge was the Comte का viewpoint होची जो observation होदिबो और classification होदिबो fact
It was governed by the industrial administrators and scientific moral guides. जो माने industrial administrator थिबे इनका scientific moral guide थिबे से जो perspective में थिबे जो view पॉइंट में थिबे तादर society रो किछि ना किछि developmental activities जैसे observation predominates over imagination. Sorry. It was governed by industrial administrators and scientific moral guides. So at this stage, the priests or the theologians were replaced by scientists. Scientists ମାନଙ୍କ द्वारा ताको replacement करथिले. The warriors were replaced by the priests. then एमिति थिला गोटे सोसाइटी जदि तिष्ठि रहउथिला सेठी केवल बेसी पावरफुल रहिथिले को माने warrior माने योद्धा राजांग पाखरे राजा को प्रोटेक्शन दउथिले किए तमे जानथिबो आर्मी फोर्सेस बा वारियर माने सेठी पई पोर्टफोलियो देइछथि हमर सप्तांग थ्योरी एवं स्टेट चैप्टर लिखिछथि इंपोर्टेंस ऑफ बॉर्डर इन द सेंस आर्मीज सब बड़ पई एसेंस राजा को पाखरे जेमति दिले कोन राजा को कोन दिले सेना गोटे कंट्री रो साधारणतः रहउछथि कोन आर्मी फोर्सेस तीनटा कैटेगरी कोन कोन लैंड रे रहले आर्मी जनरल लैंड रे जो माने रहले जनरल महाकाश रे जो माने रहले एयर मार्शल समुद्र रे जो माने जल रे रहले तीनटा कैटेगरी रहले कोन आर्मी फोर्सेस दोज हु आर प्रोटेक्टिंग द नेशन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंसी एट द टाइम ऑफ तापर देखबा ऑल थ्योरेटिकल कांसेप्ट बिकम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्रत्येक थ्योरेटिकल कांसेप्ट यदि देखिबा तले गोटे पॉजिटिव ही करे किबा साइंटिफिक एप्लीकेशन. So it may be concluded that in the first stage the mind explains phenomena by ascribing them to supernatural power or God. भगवान अछंती भगवान गोटे सत्ता अछि किंतु प्रकृति रे यदि प्रैक्टिकल फील्ड रे हम देखिबा बहुत समय रहउची श्री जगन्नाथ रो गोटे श्री विशेष करी कार्यक्रम टीवी रे सेते बेले अनुभूति रे श्री जगन्नाथ कि जगन्नाथ को केमिति देखिछि कोन हे जे भगवान लोक माने कहि कि काली किंतु भाबिबा दरकार यदि जगन्नाथ मंदिर तिष्ठि रहिछि किछि साइंटिफिक बैकग्राउंड बेस कर तिष्ठि रहिछि जगन्नाथ मंदिर रे जो अनुभूति जक पे लाइव टेलीकास्ट करूचे से माइक्रोफोन का पूरा साइंटिफिक डेवलपमेंट में कि वो जे कोन से चैनल हमर जे कोन से मीडिया जे कोन से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे कोन से हमर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन दैट इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट. So students, in the final stage, man observes nature and humanity, objectivity in order to establish God. Sorry, it may be concluded that in the first stage, the mind explains phenomena ascribing them to supernatural power of God. कौन सी supernatural power की God का मतलब ये तो बड़ा analysis करे थे. देखो all theoretical concepts so it may be concluded that in the first stage the mind explains phenomena by ascribing them to supernatural power or God. ये दुनिया रे supernatural power की बात किसी ना किसी रही है. The second metaphysical stage is a mere modification of the first. First stage is theological. Again, first is our theological stage. Second stage first stage है हमारा कौन की theological stage. से theological modification है हमारा कौन metaphysical stage. In the minds of a mind suppresses the abstract forces produce all phenomena rather than supernatural beings. And in the final stage, man observes nature and humanity objectively in order to establish. Dharmam antaram sukham nasti. Where there is no religion, there is no peace. धर्म मनुष्य जेतबे बन पेपर ठार आरंभ करी रहउतला जो जगह रे सेतबे ओटा धार्मिक भावना थिला केबे के धर्म भावना रे हम अछु मैं कोन सब बळे जे धर्म भावना नतो स्कूल रे कोचिंग रे कॉलेज रे प्रत्येक गणेश पूजा करू किंतु बन जंगल जेतबे मनुष्य बौद्धिक शिक्षा विकास न घटी दिला मनुष्य जेतबे पूजा करतिला का तो
विशेष करी पत्थर पहाड़ जहाँ को कहला मनुष्य गोटे कौन से प्रकार आइडेंटिफिकेशन आनी पूजा पाठ करते इवन देखा बोले यदि आम देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुगे में पशुपति ठाकुर को पूजा कर पशुपति होती किए महादेव शिव जिते देव अच्छा ठाकुर अच्छा सब श्रेष्ठ ठाकुर किए महादेव जिते मंत्र अच्छी सब बड़ मंत्र किए महामृत्युंजय मंत्र तेणु कहले आम जब देखा प्रत्येक जुगे किसी ना किसी ठाकुर अवलोकन अच्छी प्रत्येक जुगे आविर्भाव किसी ना किसी वातावरण अच्छी जोटा समाज में किसी ना किसी आइडेंटिफिकेशन आनी पारिछि रिलेटिंग टू द सुपरनैचुरल थिंग्स ऑफ द So, in the final stage, man observes nature and humanity objectively in order to establish laws. Law of establishment करिबा पई final stage आसी एवं जो स्टेज रे कोन है जे ह्यूमन बीइंग रो किछ ना किछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होई जे डिवाइन पावर corresponding to the three stages of intellectual development there are two major types of society प्रत्येक सोसाइटी रे दी प्रकार स्टेजेस का डेवलपमेंट हम रहता है गोटे होची थियोलॉजिकल मिलिटरी टाइप सोसाइटी और गोटे होची इंडस्ट्रियल सोसाइटी थियोलॉजिकल मिलिटरी टाइप ऑफ सोसाइटी हम गोटे कहबी प्रैक्टिकली ऊपर तमे कहलो सुपरनैचुरल थिंग्स प्रथमे हमर ग्रामांचल डेवलपमेंट होईची ना शहरांचल डेवलपमेंट होईची शहरांचल डेवलपमेंट ताले ग्रामांचल रे कोन रहिची किछ ना किछ सुपरनैचुरल थिंग रे एबे भी भावना नहीं अधिक गांचल लोक माने जो 12 वर्ष रे हम 12 वर्ष रे 13 पर्व होची बेसिकली सेलिब्रेशन होची कोडी रूरल एरिया criticism. The theory of a law of a three stages of a Comte is not free from criticism. It can be criticism according to Professor Bogardas. Comte has failed to postulate a fourth thinking stage, namely the specialized thinking stage, which would not merely emphasize the use of a natural process. प्रकृति को स्टेज रे बेसी नेचुरल प्रोसेस रो अगर हम से प्रेम देई जंदी से स्टेज रे नेचुरल प्रोसेस रो किछि इम्पैक्ट होता है देखिबा एटा कंटेज उठे देले खाली कोन करछंती आकु काहे की क्रिटिसाइज कराउची प्रकृति रे कंटेज को व्यू की क्रिटिसाइज करछंती कोन हमें पढिले की क्रिटिसाइज करछंती कंटेज को व्यू अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोगार्डस कंटेज हैज फेल्ड टू पोस्टुलेट द फोर्थ थिंकिंग स्टेज for the thinking stage to proper way postulated kari parna the specialized thinking stage which would not merely emphasize the use of natural process pura kon impact rahibo seita madhe proper way elaborate karaje eta alagta criticism law of three stages कॉलेज रे पढा होची ईमेल ग्रुपांतर कांसेप्ट पढाई छी पढा होची So you need one political science law, sociology exam our observability. Not migration. Not migration. College रे ये तुम्हारी नोट बोल Now so I want to follow. वो बोलो सेमान देखुने सब कुछ पूरा सब चलेगा अब हमें सेकंड नोट कर दे क्या उससे देखिए कि हम क्वेश्चन दे देंगे कि एक इम्पोर्टेंट अच्छी काम कर दिया क्वेश्चन आंसर कर देंगे बाकी घर करना तो शॉर्ट नोट दीजिए कॉलेज में जैसे से स्पीड पढ़े देके कॉलेज में नोट करे काम न करे देके हमें टिके हमको टाइम लगेगा क्वेश्चन वाले टॉपिक को पूछेगा फिर नोट करना हम जब खाली नोट करेगा पिला तो कांसेप्ट क्लियर हो कॉलेज रे से माने काम कर कॉलेज तरफ गोटे नोट दिए कोचिंग गोटे नोट देला तमे गोटे प्रकार नोट कर तीनटा लोग नोट ट्रांसलेटर करले नोटटा फाइंड कर सेंता किछि नै ए जो नोट गुडा वर्तमान कोन कि तमे इंस्टीट्यूट रो नोट नै दबो जे मानु से कोन कर नोट देखिबे सेही नोट को कोन कर जोटा भलो नोट आइथिबो सेटा को व्हाट्सएप पर ग्रुप पे छाडी जेम इंग्लिश मीडियम स्कूल रो ए पिलांगर कोन बेनिफिट होला गोटे प्रकार नोट जे समस्त लिखले कोन मार्क पडिबो कौन से नोट कहां पे दिया तुम्हारा नोट करना अछि तमे टाइम बेसिस करके आसो कि इंस्टीट्यूट रो परमिशन में तुम कहै छी चिन्नु सर पर परमिशन में बहुत टाइम रे आसीबा कतना सब प्रकार बोल ओके हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ाई छी
सर क्या स्पेंसर रेवेंसर पढ़ाई छे सर हमर सेकंड चली सर एक नहीं तमर ये जो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी रे जो कंट्रीब्यूटर्स रहिले से छात्र कोन कोर्स रे अछि कंट्रीब्यूटर्स माने ये फर्स्ट चैप्टर रे जो माने कंट्रीब्यूट कर जंदी सोशियोलॉजी रो डेवलपमेंट में केते सिलेबस रे अछि देखिते सिलेबस तो बाहर कर कोर्स स्टडी बुक में मोबाइल देखो देलो बाहर अरे से कथा में तुम सिलेबस टा प्रोसेस ऑफ स्टडी सोशियोलॉजी रे लिखो ना माने प्लस 2 रे हमरा हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल ग्रुप सरी गले सेटा टॉपिक सरियो कहना हमें आगु डाकी थिले वर्तमान नुवा पिला आश्चर्य बोली बैकिंग हो जे रिवीजन हो ए जो बुझे लगी तेजस हमर टिके कॉन्सेप्ट क्लियर होवा पे हमर दरकार सुना वर्तमान हमें तरगर होबनी कॉलेज रे जेंति पढाई देले स्पीडली सी तांकर कहि देबे नोट कर दे पढे एटा कोन तुम सेकंड ईयर इचेटा फर्स्ट ईयर तुम कॉलेज के भी रिसेंटली जाउ जो डिटेल स्टडी करो एमसीक्यू पैटर्न ऊपर फोकस करो नोट जे गुडा के एसेंशियल नोट गुडा व्हाट्सएप पे छाड़ी देबी कि असुविधा नहीं बढ़िया मीडियम के इंग्लिश मीडियम अपन गुडा सोशियोलॉजी रो ग्रुप कर दिया सोशियोलॉजी रो गुडा ग्रुप कर देले मो ऑटोमेटिकली सेंड कर दे सोशियोलॉजी रो ग्रुप कर दो सोशियोलॉजी ग्रुप कर दो सेंड कर दे बढ़िया मीडियम इंग्लिश मीडियम नो अब ये जो कंट्रीब्यूटर गुडा करा से गुडा एक्चुअली आगु कोर्स पे नथि नहीं कंट्रीब्यूटर गुडा को वर्तमान तुमर सेटा नाही कोर्स रे हमर मीनिंग नेचर स्कोप एठु आराम किंतु तमे जदी पढिबो
Law of three stages ର ଆରମ୍ଭ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ ଫର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ସେମିତି ହରବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର କଲେଜରେ ପଢିଛେ ପଢା ହେଇଛି ସବୁ କଲେଜରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା law of three stages ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜରେ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଟେଷ୍ଟ Okay, listen. Herbert Spencer, page number 8 students. এটা কাহিনী না ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন গুলা রয়েছে ফিউচারে যে তুমি কোন মানে অনার্স করলে সোশিওলজি এসব সোশ্যাল থট রে চ্যাপ্টার গুলা রয়েছে Herbert Spencer was born in the 1820 and died in 1903. Herbert Spencer was born in Derby, England on 27th April 1820. 27th April 1820 died. He was recognized as one of the important social philosophers of the 19th century. Social philosopher is in the 19th century reputed. He had exerted a profound influence in the development of modern sociology. Modern sociology रे केमिति development हेई परिबो Herbert Spencer for next contribution. He was treated as a continuer of a complex evolutionary action. कंप्लीट देखिले इवोल्यूशनरी एक्शन माने जेतबे सोशियोलॉजी हो कि जे कोन से सोशल साइंस हो स्टेज बाय स्टेज तर डेवलपमेंट हेला सेमती सोशियोलॉजी रे केमिति कोन इवोल्यूशनरी प्रोसेस रे डेवलपमेंट हेदिला तापर से he was much more precise than compared with specifying special fields for which sociology must take responsibility. That is sociology proper responsibility नहीं कौन से परफॉर्मेंस करेगा. He is believed to be the most notable exponent of social evolution. Social evolution is the greatest control. He is also considered as the father of a classical evolutionist. Classical evolutionist was a father. In 1848, he was appointed as an editor of the Economist. Economist was an editor. By 1850, he had completed his first major work, Social Statics. Social statics publish ହେଇଥିଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବ he is famous for his theory the theory के हम कौन कहू social evolution there is social evolution and organismic analogy in the study of sociology भितर organismic analogy भितर some of the important writings are and important writing कौन थिला principles of ethics जोटा printed और publish ହେଇଥିଲା 1891 रे Principles of Psychology 1855 अच्छा तो इतस बुझुच दा बुक अछि तापरे Social Statistics 1850 then Principle of Biology 1864 ରୁ 1867 ଭିତରେ publish ହେଇଥିଲା then Study of Sociology 1807 ଆମେ ଦେଖିବା organism analogy देखा an important work of Spencer which was shared with both Comte and Durkheim was his theory of organic analogy in which he developed the tendency to see society as an organism. Society के गोटे organism हिसाब रे हम कौन करू जानिबा देखिबा. So he borrowed his concepts from biology concept. He was concerned with the overall structure of a society, पूरे society structure कौन है परिबो. The interrelationship of the parts of society and the functions of the parts for each other as well as for the whole system as a whole total system का बाबत रे से कौन करते हैं ताका concept दे दिले that is हम जोटा कहते organic evolution biological interpretation जो डाटा पूरा collection करते हैं from biology. He had compared the society with a living organism by taking into account of the जेमति गोटे जीवन प्राणी अछि तार ऑर्गेनिज्म गुडा को डे बाय डे डेवलप करि थाए सोशियोलॉजी रो मतलब सोशल ऑर्गेनिज्म गुडा को अछि कोन करते डेवलपमेंटल स्टेज को फर्स्ट पॉइंट देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ सोसाइटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म सोसाइटी हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रो किछि ना किछि डेवलपमेंट आसे द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड इट passes from simple to complex. जो सोसाइटी रो डेवलपमेंट हो जे कोड पास करे सिंपल रो कॉम्प्लेक्स को पास करे. At the time of a war, a living organism or a biological organism is very simple.
It has no self of its own, but gradually, due to its development, it becomes more and more complex and complicated day by day. ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଛି ତାର social living condition को बेस कर से बड़ ହେଇକି ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିଲା ଯେମିତି ଆମର କଣ ହୁଏ particularly ଗୋଟେ societal ର development perspective it has no self of its own but gradually due to its development it becomes more and more complex and complicated day by day. It changes its structure. In the beginning, it is small, but it becomes quite complex gradually. Gradually, it becomes complex. In case of a society, we find the same thing. At the same time, of its origin, it is very small and simple, but it becomes vast and complicated gradually. The forward stage vast and complicated. For example, the hunting and food gathering society has now reached at its modern stage with the changes and development of ଦିନେ ଥିଲା ସମାଜରେ କଣ କି ଶିକାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆସିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତମେ ଦେଖ ଦିନେ ମଣିଷ କଣ କରୁଥିଲା ପଥର ଫିଙ୍ଗିକିରି ପାଣିକି ଶିକାର କରୁଥିଲା ଇଭେନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ବିଶେଷ କରି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା କରୁଛେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରୁଛେ then students there is a close relationship in its parts and organs in the biological organism or living organism there is a close relationship in the parts it implies that all the parts or organs are dependent upon each other in a living organism for example each organ performs separate function of its own ଆମ ବଡିରେ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନ similarly different organs perform different functions for the continuity of the whole neither the function of one organ can be carried out by other organs nor the whole can be maintained with the help of all the functions of all other organs ସବୁ organ ର function ଗୁଡା କେତେବେଳେ with the help of organs ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ଆମର ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆମକୁ କନସିୟସ୍ କରେଇଲା ବ୍ରେନ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଭେସନ ରିଆକ୍ଟ କରି ପ୍ରୋସେସ ହିସାବରେ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ମଶା କାମୁଡିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ମଶା ଯଦି ରାଇଟ ସାଇଡରେ କାମୁଡୁଛି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆଟାକ୍ କଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯଦି ମଶା କାମୁଡୁଛି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରେନ୍ ର କିଛି ରହିଲା ସୁପରଭିଜନ ବ୍ରେନ୍ ଆମକୁ କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆଣିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଭଳି सोसाइटी होची गोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस सोसाइटी रे यदि कोनोसी गोटे फैक्टर प्रॉपर रे फंक्शन न कला सोशल सिस्टम के पहले प्रॉपर रे फंक्शन करि पारि हमें सब सोशल बीइंग हमें सब पॉलिटिकल बीइंग एई जे कोन पई फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन होची फैमिली फैमिली रो हमें किछि कल्चर सिखेले फैमिली रो हमें किछि फैमिलियल एजुकेशन सिखेले जो एजुकेशन बा कल्चर फ्यूचर रे टॉप लेवल There is a close relationship in its parts and organs. The biological organism or living organism, there is close relationship to parts. It implies that all the parts or organs are dependent on each other. In a living organism, for example, each organ performs separate functions of its own. Similarly, different organs perform different functions for the continuity of the whole. Neither the function of one organ can be carried on by another organ nor the whole can be maintained with the help of all the functions of all organs. So, प्रत्येक organ has a responsibility in separate. So that is also true of a society. All the parts of the society depends upon each other. But a society la proper functions by proper continuity by good part, how good part of the next point. There is the importance of the whole in both the society and the living organism. Although all parts of a society and living organisms are interdependent, there is importance of importance. If one part gets destroyed, then the new ones are born. For example, society विभिन्न प्रकार social organizations.
यदि गोटे पुराना सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे रे फंक्शन करनी प्लेसमेंट को कोन करूची so it's a different parts carry out the orders issued by the center. So society and the living organism, society and the living, according to Spencer, society and the living organism are similar as both of them following similar processes and methods. Almost all similar process or method for its effective functioning. For example, in the living organism, the various systems like digestion, circulatory, respiratory, etc., are responsible for its function. Whereas in the society, the transport system, communication system, production as well as the distribution, etc., fulfill their respective. ଆମର ବଡିରେ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନିଜମ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ନିଜର ଫଙ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ଯଦି ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଡ୍ରପ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଚଏସ୍ କଲେ ଆରେ ଫୁଡ କୋଣ ଆସିଲା ବୋଲି ଫୁଡ ଆସି ଆପେ ଆମ ପାଟିରେ ବସିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ସେ କୋଅପରେଟ କରି ଆଣି ଷ୍ଟିକ୍ କରିଦେଲା ତାପରେ ଆମର କଲେ ଯେ ପାର୍ଟି ମାଉଥ ଯୋଉଟା ଫଙ୍କସନ କରିବା କଥା ଚିଉଙ୍ଗି ଫଙ୍କସନ ଆସିଲା प्रत्येक ऑर्गन को प्रति प्रत्येक की सेटिंग को बेस करी माइंड सेट को बेस करी तापर परफॉर्मेंस so according to Spencer, society and the living organism are similar as both of them following similar processes and methods for its efficient functioning. For example, in the living organism the various systems like digestion, circulatory, respiratory, etc. are functioning, whereas in the society, the transport system, communication system, production, as well as the distribution, etc., fulfill their respective roles. Thus, Spencer clarified that there is a similarity between society and living organism. Society है ला कि living organism में तेरे किसी ना किसी clarity रोची पर relationship ये कहले. So, apart from the above similarities between living organisms and the necessary and the society, Spencer has analyzed some points of difference between the points of difference. They are first, the living organism is a complete and integrated whole. Living organism got a complete and integrated whole like a function and whereas society is composed of discrete and dispersed elements. It is dispersed and dispersed society. Second, there is no centralization of a consciousness in the society, whereas in the living organism, although different organs do have different consciousness, it has a centralized consciousness. But in the society, each and every part has a separate consciousness. हम इंडिविजुअल है जो लिविंग organism. यदि कौन सी ह्यूमन बॉडी रो गोटे पार्ट रे घटना घटी गला सेटा सैंक्शन ऊपर प्रभाव किंतु सोशल फील्ड रे ये बड़ी घटना घटिया तले टिके टाइम टेक मु एग्जांपल कहबी देखो हमर वर्तमान कोन होई छै ना हम पांच पट गोड़ को गोटे सीरियसली किछि सेटा जो बिंधाटा हला टोटली बॉडी ताको कोन कला कॉन्शियस करेला हमको फील करली किंतु सोशल फील्ड रे मु उदाहरण स्वरूप कहबी एग्जांपल धरा जाओ हमर इम्प्लीमेंटेशन हला इंटरकास्ट मैरिज जेतबे इंटरकास्ट मैरिज इम्प्लीमेंटेशन हबो ये सोशल सिस्टम रे तार किछि प्रभाव पड़बनी कि सब लोग कोन सैटिस्फाइड हेबे बहुत लोग कंजर्वेटिव होय छै सब कोन करबे इंटरकास्ट करबे एबर मॉडर्न सोसाइटी रो दिला बना छथि सेटा कोन सोसाइटी के कंट्रोल है. The living organism is a complete and integrated whole, whereas society is composed of disparate and dispersed elements.